CIRC of ICI has started a series of 7 days industry-specific analysis from 21st June till 27th June. Today is the second day of this series. Today's topic is real estate and builder. I am CA Madhurima Sethi from Brass City, Muradabad, UP. I am moderator of today's BC. Now I would like to request Secretary CIRC, CA Lokesh Maheshwari ji for welcome letter. Lokesh sir. Thank you, Madhurima ma'am. Over to Lokesh sir. I heartily welcome today's speaker, CA Abhishek Rajaramji, in our webinar. I welcome today's guest, CA GB Gupta ji, and my council colleague, CA Anil Yadav ji, and all the members who joined the webinar. आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर जो 75 दिन में 75 प्रोग्राम की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसके अंदर एक नया इनिशिएटिव, जो जीएसटी की पाठशाला सब जगह चलती है, लेकिन जो हमने नया इनिशिएटिव इस बार लिया है, हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक हर दिन का एक प्रोग्राम डिसाइड किया है. इसके अंदर जैसे आज हम जो बात करेंगे रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स उनके जीएसटी के टाइम पर आती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके लिए जो वेल नॉन स्पीकर और एमिनेंट स्पीकर हमारे साथ है, अभिषेक राजाराम जी, तो वो सर हमें सारे जो प्रोविजंस जीएसटी से रिलेटेड है वो हमें इसमें बताएंगे. और इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सारी प्रोसीडिंग्स के लिए सीए मधुरिमा सेठी को वापस हैंड ओवर करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं सीए जीपी गुप्ता सर. आई वुड लाइक टू गिव हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन. He is practicing CA, CS and ICWA. He runs Ghia and Company, established in 1958 in Jaipur. He was the non-official director in SBI Bhopal Circle by Finance Ministry for 3 years, 2011 to 14. He was president of Tax Consultant Association Jaipur for the year 2017 to 18. He served Jaipur branch from year 2001 to 2004. As a treasurer in 2002 to 2003, as a secretary from 2003 to 2004. He was central statutory auditor of multiple public sector banks. He is co-opted in member in executive committee in All India Federation of Tax Practitioners for the year 2021 to 22. I would like to request chief guest of today's BCM, CA GP Gupta sir, past president TCA Jaipur, to share his words of wisdom. Over to GP Gupta sir. GP Gupta. Good afternoon. I am audible? Yes sir, sure. Respected Sri Atul Mehrotra ji, Chairman CIRC of ICI, Lokesh Maheshwari ji, Secretary CIRC, my younger brother CA Anil Yadav, Chairman Sikasa of CIRC and coordinator of this program, Madhurima Rathi ji, moderator of this program, CA Abhishek Rajaram ji, learned speaker on the topic GST on real estate and builders, and all other office bearers of the CIRC, fellow members, my friends, brothers and sisters. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank the entire team of CIRC of ICI and all its esteemed members for making continuous efforts in enriching our profession with the industry-specific knowledge and update all the amendment law known as GST. Friends, जैसा कि हम देख रहे हैं, GST को अभी 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और GST में जितनी सी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो जीएसटी को शुरू में बताया गया था कि जीएसटी विल बी वेरी सिंपल एंड इजी, उससे हम लोग सब देख रहे हैं कि 5 साल में हमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है और कितने जूझ रहे हैं, और सभी प्रोफेशनल ब्रदर्स उसको फील भी कर रहे हैं. और इसीलिए आज जो सीआईआरसी टीम ने ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज पे सेमिनार रखी है, क्योंकि हर इंडस्ट्री की हर तरह की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. जो भी प्रोफेशनल किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डील करना चाहता है, उसको इसके प्रॉस एंड कॉन्स या जो भी लॉ है उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए, तभी वो उस पर काम कर सकता है. इसके लिए जो सीआईआरसी टीम ने जो सेमिनार रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
और ये पूरी टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। हम सभी जानते हैं कि एक छोटी से छोटी गलती भी आज प्रोफेशनल्स के लिए कितनी भारी पड़ रही है। सभी के टारगेट पर हम प्रोफेशनल्स हैं, ये अभी हम पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो मेरी सभी को एडवाइस है, वी ऑल शुड डू आवर वर्क very cautiously and diligently. Friends, today we all are gathered here to discuss on the GST implication on builders and analysis of GST law on real estate industry. Undoubtedly, the real estate sector is one of the most important in the Indian economy. After agriculture, real estate sector is the second largest employer generator in the Indian market. As for my understanding, the implementation and provision on the GST law on the real estate industry are most complicated. In the past 5 years, the industry has faced so many problems in the issue of GST implementation. Challenges like land development right related issues, complication in the land cost, matching concept with the GSTR 2A, reverse charge mechanism problem in the FSI, issue in GST on transfer of development rights, etc. Even though the council has made the continuous amendment through its circulars, notification, and streamline the working of the GST in this industry, but still there are a lot of the issues which are pending to be resolved. And we have today with us Sri Rajaram ji for the eminent speaker to resolve all these issues. So now, without taking much of your time, I would like to thank the entire team of CIRC, especially my younger brother Anil Yadav, for inviting me and sharing my view on this wonderful occasion. Thank you again. Now, I hand over to the Madhurima ji. Thank you. आज के स्पीकर सीए अभिषेक राजा राम जी हैं. He is practicing CA in Delhi and very well known personality in GST field. He has authored many books. He has delivered 1000 lectures. Now I would like to request today's speaker CA Abhishek Raja Ram ji to start his delegation. Over to Abhishek. Thank you. Thanks a lot to entire team of CIRC, especially to Anil Yadav sir, and thank you GP Gupta ji for your wonderful opening remark, and Lokesh Maheshwari sir and Madhurima madam. So GP sir, one thing for sure कि आपने मेरी पहली slide ही discuss कर दी. So what I wanted to discuss on my first slide, which has been discussed by you. So that's good. So why real estate is so important? So it is 6 to 8% of the total GDP, and it is second highest employment generation, which you have rightly told to us. And now the thing is that this was an unregulated sector. That's why they came with the RERA, and RERA is state specific, and through that state they are trying to regulate state-wise. So there could be a position where RERA rules in Uttar Pradesh might be different than RERA rules at Madhya Pradesh or Maharashtra, or say in Rajasthan, we could have a different RERA. So first thing very important is that a taxation law can be followed only when it is allowed as per the constitution. So constitution overrules everything, and under the umbrella of constitution, the tax has to be collected. And we have an important word equality in our preamble of the constitution. And when we talk about levying taxes, so entry number 49 of 7th schedule list 2 speaks about taxes on land and buildings. So that becomes a state matter. And that is the reason why sale of land and sale of buildings are subject to stamp duties. Now, when we talk about these taxes, stamp duty, these are not value-added taxes. Every time, so if someone has bought a land on 10 lakh rupees, he has paid stamp duty on 10 lakh, and when he is selling at 15 lakh, so he will pay on 15 lakh again. Of course, the buyer will bear that, but there is no value addition. Every time it is 100% taxable. Now the constitution grants power to union and state to levy GST.
subject to these are recommended by GST Council and as per the Constitution. Now, what has happened in this is, when we talk about GST law, so they talk about taxing of land and building with the deeming provisions in Schedule 2. There are 3 schedules in GST. Schedule 1, whether you have made payment or not, it would be considered as supplies. Schedule 2 is explanatory provision or a deeming fixture that we will consider this supply as supply of good and this supply as supply of services. शेड्यूल 2 का सिर्फ यही मतलब है, वो एक्चुअली बताना चाह रहे हैं हम इसको किस कैटेगरी में टैक्स करेंगे. एंड कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड एज सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस. और सिंपल सा नियम ये है कि अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले 1 रुपए भी अगर ले लिया, 1 रुपए भी अगर ले लिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो उसके बाद पूरी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग दैट 1 रुपी वुड बी चार्ज टू जीएसटी with 1/3 deduction in case of builder, 1/3 deduction for the land. इसका ये मतलब नहीं कि मान लीजिए 20 लाख की आपने सेल करी, 10,000 रुपए एडवांस ले लिए, तो 19,90,000 पर जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ 10,000 लगेगा, चाहे वो 19,90,000 कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद है. ऑफ कोर्स देयर आर की कोई रहना शुरू कर दे, देयर आर अदर एक्सेप्शंस आल्सो, बट the problem is this is when we talk about 1/3 deduction, 1/3 deduction of land, then it becomes a challenging provision. Because see, when we talk about land, there could be a case where land would be more valuable than 1/3. Now, which cases this could be? When we talk about high rise. In high rise, the land value would be lower. In high rise building, land value would be lower. Whereas in case of Bangalore, in case of pent villas, then the cost of land would be higher. So low rising agar building hogi, the land cost would be higher. In case of villas, land cost would be higher. In case of Bangalore, land cost would be higher, but in case of high rising floors, then land cost would be lower. अब लॉ ने तो लिख दिया सब में 1/3 डिडक्शन देनी है, 1/3 डिडक्शन देनी है, सब जगह लॉ में ये लिख दिया. Now, say consider it one thing, that I am developing a project at Muradabad. I am developing one project at Jaipur. I am developing one project at Delhi. Now, other than land, all costs are 20 lakh rupees at all 3 places. ठीक है? Now, it could be possible कि मुरादाबाद वाले की जो सेल प्राइस हो वो 50 लाख हो, जयपुर वाले की 75 लाख हो और दिल्ली वाले की 1 करोड़. Perfectly fine. The cost is 20 lakh rupees for each. Other than land cost. अब अगर मैं 1/3 लैंड कॉस्ट तीनों जगह देता हूं, 1/3 लैंड कॉस्ट मैंने तीनों जगह दी, तो 50 लाख पे 1/3, इट वुड बी अराउंड 16.67 lakh. In case of Jaipur, it would be 25 lakh. In case of Delhi, it would be 33 lakh. लेकिन अगर बिल्डर का मार्जिन दोनों जगह से, फॉर एग्जांपल उसने 20 लाख पर 20 लाख ही मार्जिन चार्ज करा था या 10 लाख ही मार्जिन सोच के चला था आरओआई लेकर, तो ये जो डिफरेंस है वैल्यूएशन का, ये किस लिए? Why it is 50, 75 and 100? That is because of the land cost. But when we go for the deeming fiction, we are stepping beyond the Constitution. And with this deeming fiction, we are trying to tax land also, which was not allowed. Because GST law has said, I have to tax only and only the construction services which has to be charged. No, this was the contention from the very first day. सभी लोग इस पर एग्री नहीं थे, but again, किसी ने भी इसको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की in the law of the land. चैलेंज 2 रीजन से नहीं करा जाता कभी कोई प्रोविजन, कई बार टू स्टैंड इन द गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट या नॉट टू कम इन द बैड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट.
कि भैया अगर हम ये प्रोविजन चैलेंज करेंगे हम सरकार की निगाह में चढ़ जाएंगे. देयर कुड बी वन रीजन. सेकंड रीजन कुड बी कि अगर मैंने किसी सिस्टम को चैलेंज कर दिया तो मैं उस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, और अगर 10 साल 15 साल बाद मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, then the quantum of tax with interest penalties could be very high. Leave interest penalties, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि अगर टैक्स भी आ गया, then you can't go back and recover the money. That is why nobody challenged it. But this has happened recently and some decision has come. So this was a special leave application filed by Manjul Manish Bhai Bhatt, and decision was on May 2022. A recent decision, 1 महीने कुछ दिन का decision पुराना है. And the High Court said that there is a deeming fiction of taxing which is not mandatory. Now what they said, it is not mandatory. Now, when we talk about Gujarat High Court decision, now it said that whatever the provisions have come through notification 11 by 2017, they are ultra virus to the provisions of schemes, or say schemes छोड़ दीजिए. What was the intention while framing this law? The intention was to charge construction services, to levy GST. Now, when we talk about levy and in GST, we have Section 9, which gives power to levy. Section 7 is of supply, and in Section 7 it has been written that we have 3 schedules, 1, 2, 3. And we have valuation, Section 15. This is the whole scheme of the GST. And then comes Section 16 for ITC. That's the substantive provisions, and 17, 18, 19 are the machinery provisions. कि ये होगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, X होगा तो इस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा. That are the machinery provisions. The main substantive provisions of ITC is Section 16. But this is the whole of the GST. Again, we have definitions in Section 2 which overrides everything. So the idea behind levying taxes for construction services, supplies, Section 7, Schedule 2, was only on the construction service. There was no intention to levy taxes on the land. But what this deeming provision is doing, it is providing taxes on the land. Now, Honorable Gujarat High Court said this is against the word equality. So it is said that everyone should have equal opportunity and everyone is equal before law. So Article 14 speaks about equality, and this has been violated by this. And they said that there was the intention of the legislator was only to impose tax on this construction activity. It was never the intention, but again, what they said, when we read this, so then we understand this provision. The High Court reads down the provision. So anyone would like to answer what does the reading down of provision means? In the chat messenger. Madhurima ji, as you are the moderator, can we have chat discussions with the audience? Can we ask them to reply in chat messages? Yes or no? आप mute पर है. Okay. So my request. Sure, sir. Sure. So my request to the I audience. request all the participants who want to ask any question or give any reply to Abhishek sir's question. Please give your reply in chat box. So my question right now is to the participants: what does the reading down of provisions means when we say कि Gujarat High Court has read down the provision? What does the read down means? Specific word. चलिए इसको समझते हैं. इसको समझते हैं. So what is the reading down of a provision? So High Court will always answer. Sir, Yes. one reply in chat. Correct. To restrict the interpretation. Now,
Now, what we are doing, High Court will always answer to the question of the law. Question of law. And it will provide a harmonious interpretation. कि भाई एक सेक्शन में X चीज लिखी है, दूसरे सेक्शन में B चीज लिखी है, तीसरे सेक्शन में C चीज लिखी है. So what does in totality ABC means? So this is the way high courts read down the provision. They will answer question of law. Vis-a-vis, when we talk about Supreme Court, they have to answer substantial question of law, and they will now read down the law. They have the power to write their own law, to dictate, to tell that law means this, and they can write down the law. And this was in Article 142. We have also, Supreme Court order is applicable whole of India. That is Article 141, and that is binding one. So, Article 142 gives Supreme Court immense power to pass any order, to go beyond the scheme of the law also. They can struck down any section, they can do it. And when initially, in the initial years of Constitution, now Article 142 was used in many cases, and everyone was happy during those days. So cleaning of Taj Mahal, under trials were in jails, they were not getting bail, Bhopal gas strategy, these all were taken by Supreme Court. But now, in recent days, we have started feeling heat of this section. And this has happened recently in 148A income tax. देखो मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करता तो मुझे बहुत लिमिटेड पता है इस सेक्शन के बारे में, बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, there were more than 90,000 notices issued on this case. High courts have given decisions against this, that these are bound by limitations, these are not valid. But Supreme Court said, भैया 90,000 नोटिस हैं, ऐसे थोड़ी जाने देंगे, we will struck down, कोई बात नहीं, इनसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, it was a new law, and they have followed it. That is the reason why everyone is not happy. And अभी भी कई बार डिसीजन आता है कि भाई ये नोटिस वैलिड है, इनवैलिड है, लिमिटेशंस एक्ट है, नहीं है. So see, I have a limited knowledge of income tax. I had read it in last time in November 2005 जब एग्जाम दिए थे. So I have no idea of income tax, what it is, and I have no idea 148 और 148A में क्या फर्क है. So I will restrict my discussion to this point, that right now Supreme Court has said and used this power to make law. So when we have approach to Supreme Court in other cases, so say in Bharti Airtel, Honorable Delhi High Court have said Bharti Airtel did a mistake and 2A was not there, please provide them relief and refund them 980 crore rupees, 978 crore rupees. Vis-a-vis the Supreme Court, this matter went to Honorable Supreme Court. Supreme Court said, no, we are not going to allow you refund. We will understand, and ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, 2A में नहीं दिख रहा, 2B में नहीं दिख रहा, so it was a self-assessment. You could have utilized everything. And again, section 16 subsection 4 for the first year 17-18 के लिए the credit was allowed up to March 2019. So it was in October 18 जब आपको पता चल गया कि आपने credit नहीं लिया. You could have utilized that credit, but you went on to keep on waiting for the time limits. Same happened in VKC footwear. Madras High Court said refund not allowed. Gujarat High Court said refund is allowed, because they read input services as part of input, and they said, boss, आपने explanation बाद में लगाई, we will not accept this. But when it went to Supreme Court has said, and in last paragraphs of the very lengthy judgment, 104 to 109 or 111 paragraphs अगर आप पढ़ें तो they have said that, okay, we agree, this formula is not giving the desired results, but we are not going to shut down. तो वहां पर ये power use करने से Supreme Court ने मना कर दिया, we are not going to shut down. What we are going to do, we are going to accept the law as it is, and we are passing this ball into the GST Council, and GST Council will amend the law.
एंड मेक द फॉर्मूला परफेक्ट। और परफेक्ट क्या था कि फुटवेयर पर 12% इनपुट था, 5% आउटपुट था। एंड जीएसटी काउंसिल को क्या करना था? जीएसटी काउंसिल हैज टू डू चेंजेस इन द जीएसटी लॉ, रेट चेंज करना था। एंड व्हाट दे सेड, रेट ही तो चेंज करना है। तो उन्होंने 5% को 12% बढ़ा दिया फुटवेयर को, और बोले भैया अब दोनों बराबर हो गए, अब तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस बनता नहीं। तो दैट्स so that was their own vision. GST council have thought, okay, why to create unnecessary issues of refund, and then in that case someone would have said कि भैया पहले दिन से refund दो. So they said, okay, everything is 12%, now your input is 12, output is 12, we are going to. Same happened in Aap and Company. In Honorable Gujarat High Court have said that GSTR 3B is not a return. As you all remember, we were told there would be 3 returns: GSTR 1, 2, and 3. Vis-a-vis what we are filing, GSTR 1 and GSTR 3B. So 3B was not a return, and the case was of linking of the credit with GSTR 3B. And when they went to this, what Honorable Gujarat High Court said, no. As per scheme of returns, Section 39 says this is not a return. 3 was a return, 3B is not a return. But when Supreme Court said no. If intention of the legislature is कि भैया हम 3B को भी इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो आप भी लॉ में लिखना रह गया, कोई बात नहीं, हम लॉ में लिख देंगे. So again understand, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट के डिसीजंस पर अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर देते हैं कि भैया इस हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है तो हम यहां पर भी यूज कर दें. इट इज अ सेंट्रल एक्ट. GST is a central act, and one set of expertise, because it is a central act, and one high court decision is binding on other states also. Vis-a-vis the other opinion is because state high court has jurisdiction in that state. So when we talk about central act, the decision of one state high court is not applicable in other state high court. What it is, it has a persuasive value. It has a persuasive value, but it don't have a binding value. So please understand, कई बार हम लोग जल्दबाजी में कर जाते हैं कि हम किसी हाई कोर्ट का डिसीजन उठाकर कहीं भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल, मधुरिमा जी सिटिंग एट मुरादाबाद, सो दैट इज उत्तर प्रदेश, एंड टुमारो एंड अनिल सर इज सिटिंग एट जयपुर, सो ही इज राजस्थान, आई एम एट दिल्ली. अब कल को एक गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और हम तीनों अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर देते हैं सम ऑफ द क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल कि भैया इस तरह काम कर लो, टैक्सेस इस हाई कोर्ट ने बोला टैक्स नहीं लगेंगे. Then it could be possible कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स मना करने उसको मानने के लिए. So it has a persuasive value. So don't jump into the conclusion. And एक चीज और, मैं हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस के बारे में एक चीज बता देता हूँ. लोग कई बार ना डिसीजन पढ़ के बड़ी क्विकली जंप कर जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ के, कि अरे फेवर का डिसीजन मिल गया. तो इसको इतनी जल्दी नहीं पढ़ना होता. यू हैव टू चेक कितनी बेंच का डिसीजन है. फॉर एग्जाम्पल, the decision I am quoting is of two judge bench, और उससे पुराना कोई डिसीजन है which is 3 bench decision या 5 bench decision, 9 bench decision. Supreme Court you will get 9 bench decision also. कौन सा overrule करेगा? It is the higher bench decision. तो कई बार ज्यादातर हम लोग हाई कोर्ट के डिसीजन देखते हैं, कई केसेस में सिंगल जज बेंच होती है, तो उसकी बहुत ज्यादा परसुएसिव वैल्यू दूसरी स्टेट्स में नहीं होती. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हालांकि ये टॉपिक जीएसटी से बाहर चले गए. लेट्स मूव टू जीएसटी अगेन. सो कवरेज ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन इज एवरीथिंग. सो दे विल कवर लीज, टेनेंसी, एनहांसमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, एंड लीज कुड बी इवन फॉर 9 years. सो दिस कम्स अंडर रियल एस्टेट. Letting out or subletting of a building, commercial, in fact, residential complex for business also. So residential complex for business, commerce, otherwise also would come into GST. And this has a problem. This has a problem. 2 मिनट में आपसे पर्सनल बात करता हूँ, GST से थोड़ा सा हटकर हम लोग काम कैसे करते हैं और हमारे साथ समस्याएं क्या आ सकती हैं. अचानक में आपको एक दिन दोपहर में आप बिजी हैं, एक कॉल आता है, एक क्लाइंट ने कॉल करा, सर
वो ना मैं ना आपको याद है मेरी एक अंबाला में प्रॉपर्टी थी, आप कहोगे हाँ थोड़ा सा याद आ रहा है, वो ना मैं रेंट पर दे रहा हूँ जी, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? आपको भी पता है कि उसने इस कॉल के पैसे नहीं देंगे और आप भी कहीं बिजी होंगे, हो सकता है आप कहीं बिजी हो, तो ज्यादा बात आपने भी नहीं करी, आपने कहा अंबाला वाली प्रॉपर्टी है, और उसने कहा जी कैसी प्रॉपर्टी? उन्होंने कोठी है जी, है ना, आपने कहा जी जीएसटी नहीं लगेगा। 1 year लेटर डाउन द लाइन जब वो अपनी रिटर्न भराने आया इनकम टैक्स की जुलाई में, अब आपने देखा जी 26 years में तो इसका टीडीएस आ रहा है। आपने उससे कहा भाई ये टीडीएस कैसे आ रहा है? बोला जी मैंने तो फॉर एग्जाम्पल XYZ को दे दी किराए पर, उसने वहां पर वेयर हाउस बना रखा है, and you are shocked because what you thought was a residential property, and providing residential property for residential purpose is out of the GST. But what he said, and he didn't explain you more things. आपने भी नहीं पूछी, उसने भी नहीं पूछी, उसने कहा जी कोठी है, घर समझा आपने, and you have thought कि भैया उसने रेजिडेंस पर्पस के लिए दे रहा। You never ask कि भैया ये कोठी आप दे रहे हो, ये किसको दे रहे हो, किस पर्पस से दे रहे हो? And then at end of the year, now there is a GST liability. And tomorrow it could be a case where default of GST could be substantial, and there could be show cause notice and litigations also. और एंड में क्लाइंट बिल्कुल एंड में हमेशा ये कह देता है सब आपसे पूछकर काम करा था, और पूछा कितना था एक लाइन में बताया था। एंड दिस माइट हैव हैपेंड विद मेनी ऑफ यू। लेट्स अंडरस्टैंड। सो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, and we have renting of immobile property, we have renting of land and machinery. These have been specifically specified so that tomorrow there is no confusion. So then let's understand, construction of a complex building, civil structures comes under GST. You will come out of this except when the entire consideration is received after completion certificate, or we have first occupation. So first occupant is living. Let's understand what this means. So किससे certificate लेना? Completion certificate किससे लेना है? So we have, when you go to this section, so you will have specified persons कि इनसे certificate valid होगा. So architect, registered architect, ऐसा नहीं कि भैया कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि जी मैंने बिल्डिंग कंप्लीट कर ली, अपने बिल पूरा दे दिया, जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का था, मेरे 50 लाख रुपए दे दो, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, और आपके इंजीनियर ने कह दिया हाँ जी बिल्डिंग कंप्लीट है। सो दैट इज नॉट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वन। सेकंड कम्स ऑक्यूपेंट। सो व्हाट डज द ऑक्यूपेंसी मींस? जब बिल्डिंग बन रही थी तो आपने एक चौकीदार रख लिया, वो विद फैमिली वहां रह रहा था, वो विद फैमिली वहां पर नीचे बन रही थी, तो आपने सिक्योरिटी पर्पस से भी दे रखी थी उसको, वो सिक्योरिटी पर्पस से आपकी पूरी बिल्डिंग में रह रहा था। और जब आपने पैसा लिया, कैन यू से कि भाई जब बिल्डिंग बन रही थी मेरा चौकीदार विद फैमिली वहां रह रहा था, सो इट मींस देयर वाज एन ऑक्यूपेंसी ऑफ द बिल्डिंग? द आंसर इज नो। Such family living in such building is legally not allowed. This is practical thing which everyone does. आपने भी रूटीन में अपने घर के आसपास भी बिल्डिंग बन रही होगी तो कोई ना कोई रात में पूरी रात वहां रहता है चौकीदार। So this is illegal, but it is practical. Illegal and practical में फर्क है. It happens practically, but that is not legal. Now ऑक्यूपेंसी और कैसे साबित करी जा सकती? तो सॉरी, कंप्लीशन. सो यू गेट अ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, you got an electricity meter, that means your building is complete. Otherwise they will give a temporary meter. You have got water connection, that means the building is complete.
Now, can you register a property before getting its completion certificate? Now, some of the states allow this. For example, Tamil Nadu has specific provisions for this, that they will allow registry of the property even before completion certificate. Because they understand कि भाई थोड़ा बहुत काम बचा है वो बिल्डर कर देगा और नहीं भी करा तो इनका आपस का अंडरस्टैंडिंग है. So because sometimes you buy say hot property, cold property को जिसमें सब कुछ कंप्लीट होकर मिलेगा, कई केसेस में आप सिर्फ दीवारें उससे बनवाते हो और अंदर का इंटीरियर अपने हिसाब से करवाते हो. Third thing, in some cases people buy a house और खुद खरीदने के बाद रहने से पहले अपना पूरा इंटीरियर्स करवाते हैं दोबारा से अपनी चॉइस का. So does it mean that they have bought the property without completion when you are doing your interiors? The answer is no. Interiors आपकी अपनी चॉइस है. You could add, you could subtract, you could do anything. Subject to कि भैया आपने एक्स्ट्रा कमरा तो नहीं बनवा दिया, which is not legal, but that happens practically. We will not go for that. Work contract आपका अलग से covered है, but work contract in indirect taxes era में कुछ और था, but in GST era it is only when it is linked to immovable property. So land is excluded. We have discussed this. Let's not discuss. So when you are selling undivided share of land, and these are out of GST if you are selling only undivided share of land. But again, when you are selling a land plus say any apartment before completion certificate, then it attracts GST. And there is no difference. देखिए जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, we will talk about commercial and residential. But again, if we talk about getting money before completion certificate, so whether it is a commercial property or it is a residential one, it will attract GST. There is no exception in it. Surrender of tenancy right. Surrender of tenancy right is subject to GST. The exception is of residential property. अगर residential property के tenancy rights आप render कर रहे हैं, then it becomes out of GST, but otherwise it is subject to GST. When we talk about say tolerance of an act, so tolerance of an act also comes under GST. For example, you have made a payment to a builder on a promise that within 3 years he will complete the building, or if not completed, then if for the period which is it is completed by 3 साल के लिए वो complete करके देगा, 3 साल के बाद अगर उसने complete करके नहीं दी तो आपको से एक जो भी रेजिडेंशियल आप रेंट पर लेंगे जगह, उसका पैसा वो देगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 रुपीज के रेंट पर एक उसने 3 साल में नहीं दी, तो आपने उसने कहा जी कंप्लीट होने वाली 3-4 महीने लगेंगे, बट उस 4 महीने के लिए उसने आपको 15,000 रुपीज के रेंटल जगह पर आपको रहने के लिए जगह. Now this becomes tolerance of an act and these are subject to GST. So that era bhul jaiye. There were so many charges during that era. We have moved to better laws nowadays, and this is a better position where our taxes are almost 18% and 7.5%, and which we, after giving deductions, we say that this is very less amount. But that is not less amount because they don't get ITC for the same. Let's understand. So we usually divide projects into residential real estate projects and non-residential real estate project. There is no word of commercial project. In common parlance, what we will say, bhaiya commercial project hai, non or residential project hai. But in the technical terms, there are residential real estate project and non-RRE. And when we go to RERA, then we will check whether we have a word developer or promoter are different or not. So residential real estate project means where
commercial portion is not more than 15%, and all other projects are affordable. And then we have a affordable. In metropolitan city, it is 60 square meter, and in non-metropolitan, it is 90 square meter, other than metropolitan, and where the amount is charged not more than 45 lakh rupees. So इससे कम का अगर कोई है, that becomes affordable residential apartment. And this scheme was compulsory from 1st April 2019. Subject to जो ongoing project थे, if they wanted to stay out of this scheme, they would have been required to provide application for this, which otherwise everyone was converted into this. So now what we say, the effective rate. So the effective rate means after giving 1/3 deduction. So residential affordable, it is the tax is 1.5%, 1/3 deduction. So it effective rate is 1% without RTC. Other than residential apartment, affordable one. So non-affordable, it is 7.5%, 1/3 deduction, effective is 5% without RTC. Commercial RREP projects, 5%. Other than this, so that is 7.5%, 1/3 deduction, 5%, and then 18% with ITC. So this is the only one where new commercial projects with you have ITC, and effective rate is 12%. So this is, you can go through this, and there is no word developer written here in the RERA laws. So we will stick to the word promoter, and promoter and developer would be having same word. So whenever someone goes into this projects and develop something, so they are called promoters, whether it is building, apartment, warehouse, office, whatever you say. And we have these two types of persons: landowner, promoters, and builder. And then there are floor space index and transfer of development right from landowner to promoter. We will discuss this in few minutes. और इसमें एक कंस्ट्रक्शन सर्विस लैंड ओनर से एंड कस्टमर को दी जा रही है, एंड वन ऑफ द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम लैंड ओनर टू द फ्रॉम बिल्डर टू द लैंड ओनर, व्हिच वी विल अंडरस्टैंड दिस. एंड वंस वो ये प्रोविजन हमेशा चलेगा दैट इफ यू गेट एन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यू रिसीव अमाउंट आफ्टर दैट, देन इट इज exempt. एंड commercial में 18% है, otherwise it is 1% and 5%. So this is 1.5% and 7.5%. तो real estate projects को जरा discuss कर लेते हैं on this transfer of development rights for the real estate. इसको छोटे से example से मैं frame करूँगा. For example, क्या इसकी moderator हमारी मधुरिमा जी है, तो मुरादाबाद की बात करते हैं. So someone said कि some of the builder approached to visited Muradabad, and he saw कि भैया बहुत बढ़िया लैंड है और यहाँ पर मुझे एक इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बनाना, कमर्शियल मॉल बनाना है, इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल मॉल बनाता हूँ, बड़ा अच्छा है. एंड ही अप्रोच समवन जिसके पास इतनी लैंड थी, बट ही वाज अ सिंगल पर्सन. उससे कहा कि चॉइस साहब मेरे को ये आप लैंड दे दो, मुझे इस पर बहुत बड़ा मॉल बनाना है. नहीं जी कोई बात नहीं, आप मुझे इतने पैसे दे दो लैंड के, आप मॉल बना लो. एंड द पर्सन सेड, सर आप तो समझ रहे हैं इकोनॉमी नहीं चल रही, मार्केट में प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं. पैसे नहीं है तो मॉल कैसे बनाओगे, तो मैं तुम्हें लैंड क्यों दूं. बोले जी लैंड मत दो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपने राइट्स ट्रांसफर कर दो, आप मुझे पैसे मत दो. सॉरी, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, आप मुझे लैंड मत दो, राइट्स मुझे ट्रांसफर कर दो, एंड आई विल क्रिएट अ मॉल. और जब मॉल बन जाएगा कुछ कैश दे दूंगा और कुछ आपको दुकानें दे दूंगा मॉल में, वो दुकानें आप बेच लेना. चॉइस आप कहते हैं घना बेवकूफ समझ रखा, मैं ट्रांसफर राइट दे दूंगा तो भी तो मतलब वही है. डेवलपमेंट में राइट्स अगर आपको दे दिए, व्हाट डज इट मीन. भाई मैं बेचूं, रजिस्ट्री कराऊं या राइट्स ट्रांसफर कर दूं, the meaning is same. नहीं, थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है. एंड
फिर भी उन्होंने किस तरह डील कंप्लीट हुई, उन्होंने कहा ठीक है जी ऐसा करो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए एडवांस दे रहा हूँ जिस दिन आप राइट बनाओगे, और अगले 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हर 6 महीने में 50-50 लाख आपको देता चला जाऊंगा, 3 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे, और मैं 100 दुकान बना रहा हूँ, 100 में से 20 आप, 100 में से 20 आप, 80 मेरी। द डील वेंट दिस। अब उन्होंने पहले दिन 1 करोड़ रुपए दिया, एग्रीमेंट कर लिया, एंड नाउ द GST डिपार्टमेंट सेड बॉस, एंड से एक एक शॉप 10 लाख की लगा लेते हैं फॉर आवर एग्जाम्पल, फॉर सेक ऑफ, या 1 लाख की लगा लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। टोटल डील कितने की हुई सर? टोटल डील इज 3 करोड़ रुपीज इन कैश, 20 शॉप्स, 10 लाख की लगाने में ठीक है, 1 लाख में बनता नहीं, सो 20 इंटू 10 लाख, 2 करोड़ की शॉप्स, टोटल डील इज ऑफ 5 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा 5 करोड़ रुपए दे दो। किससे? सेल किसने करी है? चॉइस साहब से। चॉइस साहब से कहा 5 करोड़ रुपए पे GST। चॉइस साहब बिखर गए, मैं तो 1 रुपए नहीं दे रहा, जो लेना इससे ले लो, और मेरे पास दोबारा आ जाना मत, मैं तो नहीं दे रहा। एंड देन गवर्नमेंट अंडरस्टूड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिंग अमाउंट from an individual. That is why we have a concept of RC. Wherever government feels that they would not be able to collect revenue from an individual, and if there are two parties involved, one is individual, other one is say corporate, then collection has to be transferred to the corporates. This is the basic theme of RC. उन्होंने कहा भाई इससे तो कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसको GST समझाना ही बड़ा मुश्किल है, लेट्स शिफ्ट दिस ओनर्स टू द पर्सन। एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उन्होंने कहा जी आपने 5 करोड़ रुपए में इनसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट लिए, इट्स अ कमर्शियल वन, बोले जी इस 5 करोड़ पर आप हमें GST दे दो। बोले जी 5 करोड़ में मैंने लिए, बात सही है आप, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे 20 दुकानें क्यों देता, मैं तो इसे पूरे 5 करोड़ रुपए देता, और वो 20 दुकान भी एक्चुअल में ज्यादा में बेचता, प्रॉफिट पर बेचता। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल सेल प्राइस इज 15 लाख रुपीज, मेरे को तो 10 लाख रुपए मिल गए, एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम। The real estate lobby said we don't have money. If we have money, why we will buy transferable development right? We will buy the property as itself. Why we will provide them 20, say in our example, मैं तो 20 दुकानें क्यों दूंगा? And then department understood. They visited finance ministry like anything. They kept on pursuing, and they said that please shift the onus. Please shift the onus. और उन्होंने ओनर शिफ्ट करा। लेकिन जब ये बात झगड़ा चल रहा था और इनमें डिस्कशन की बात आई, इन द लॉजिक्स एक्सचेंज, इन्होंने कहा साहब हम आपकी बात क्यों माने, हम आपकी बात क्यों माने, क्यों शिफ्ट करें कि बाद में पैसा लेना है। Then you know what they said, real estate lobby said, and the discussion was over after this logic. They said sir हमारी बात मानने में क्या दिक्कत है, आपने जो सप्लायर ऑफ गुड्स है उसकी भी बात मानी या नहीं मानी, उस पर भी एडवांस पर GST पर हटाया नहीं हटाया। एंड द मैटर वेंट टू, दे सेड ओके। अब इस एग्जांपल में समझते हैं कि उन्हें कब कब कितना कितना GST दे रहा है। अब इस एग्जांपल को समझिए। सबसे पहले व्हेन दे सॉट एन एग्रीमेंट of purchase of development right, the builder has paid 1 crore rupees as an advance. इस 1 करोड़ रुपए जब भी उन्होंने पहले टाइम जब डेवलपमेंट राइट रजिस्टर कर रहे हैं,
उस पर उन्हें उसी दिन जीएसटी पे करना है। देन इन नेक्स्ट 2 years 6 month में क्या क्या पे करा, 50 lakh। तो जब भी 50 lakh दे विल ट्रांसफर टू द लैंड ओनर, दे विल पे जीएसटी ऑन इट, दे विल पे जीएसटी ऑन इट। ऑन द लास्ट डे जब उनका कंप्लीशन हो गया कंप्लीट, then they transferred him 20 offices or 20 shops. So when they transfer 20 shops to the landowner, जिस दिन वो रजिस्ट्री कर रहे हैं उस पर जीएसटी तब देना है। तो 20 into 10 lakh 2 करोड़ पर जीएसटी कब देंगे? Then they would be signing the transfer of those 20 shops. ठीक है, उनकी बची 80 शॉप्स। 80 शॉप्स में से फॉर अ बिल्डर 80 शॉप्स में 10 शॉप के लिए कुछ एडवांस मिल गया, 70 खुद से कंप्लीट करी, 10 शॉप्स पर जो भी एडवांस ले लिया और जो फुल वैल्यू जो कंप्लीशन या साइनिंग के बाद भी देनी है उस पर जीएसटी तब पे करना है। एंड देन 80 शॉप्स पर 70 शॉप्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचे, उसका पैसा कंप्लीशन के बाद आया तो उस पर कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं। यहां तक एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एनीवन, इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें अब दूसरे नुक्ते पर चलेंगे। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम ऑन दिस? Person is asking what would be the rate of GST? सर इट इज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 18%। और अभी उस पर आ रहा हूं रेट पर, अभी रुकिए, ये सेकंड है और फिर थर्ड एक एलिमेंट और, अभी 2 एलिमेंट और बचे। सो फॉर एफडीआई, सो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट 18%। अब आप एक चीज समझिए, सेकेंड थिंग इज, जब उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो 10 प्रॉपर्टी बिल्डर ने बेची, 10 shops, when he got money before this completion certificate, उनका रेट है 18%, 1/3 डिडक्शन that is 12% effective rate with ITC, 12% with ITC, बैलेंस पे टैक्स चला। Now, does this mean he had constructed only 80 shops or he has completed 100 shops? He has completed 100 shops. तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट तो चौधरी साहब से जो मिला वो तो पूरी 100 का था, लैंड का था, लेकिन जो मैंने उनको 20 शॉप्स ट्रांसफर करी, क्या उस पर भी जीएसटी का एलिमेंट है? नहीं है। I have provided services to them. Now when I have to value this, I have to value these 20 shops also. अब 20 शॉप की वैल्यूएशन भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ कि मेरा एग्रीमेंट 10 लाख का था, 10 लाख इंटू 20, 2 करोड़ पर जीएसटी दे दूं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? Right. So we were saying right. Everyone is saying right. What about like akin goods valuation? Now whether department will say नहीं भैया तुमने valuation गलत करी है, बाकी 80 shops और इन 20 shops में कोई फर्क तो है नहीं, बाकी 80 shops आपने 15 लाख में बेची, ये 10 लाख में बेच रहे हैं, this is under valuation। और वो अंडर वैल्यूएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज यू बोथ आर इंटरेस्टेड पार्टीज, और आपने उधर से टीडीआई का रेट कम दिखाया, इधर से ज्यादा दिखाया, तो वैल्यूएशन सेम करो, कांट दे से। अब इसमें एक चीज और, यू कुड से कि भैया 15 लाख की ही तो थी,
15 लाख की ही तो थी, मैंने कब कहा 10 लाख की? 15 लाख की शॉप्स थी, 1/3 मैंने लैंड की डिडक्शन दे दी, 10 लाख की तो आई वैल्यू। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? द क्वेश्चन इज, लैंड तो मेरी थी ही नहीं, लैंड तो चौधरी साहब की थी, मैं वैल्यूएशन में कैसे कम कर दूं? कैन आई रिड्यूस विच इज नॉट माइन? लैंड डजंट बिलोंग टू मी, तो मैं लैंड घटा कैसे दूंगा? The third angle of this, one more angle of this is, what I have to charge from him is valuation of my construction services, and on that I can pay 18% flat. Now if I say for selling a shop of 15 lakh, I make an expenditure of only 3 lakh. I make an expenditure of only 3 lakh. So plus say a reasonable 10% margin I add. So can I say my services supplies to for this landowner is 3,30,000 only? Right or wrong? Right. And on 3,30,000, I will pay 18% without deducting any land value minus whatever ITC I have on 3 lakh rupees. So that is one way of handling this. So we have done two things here: FD, transferable development right, and valuation of services from land or from builder to landowner. अभी तीसरा एंगल और समझो इसमें एक समस्या और है। अब इसमें क्या हुआ, जो चॉइस साहब को 20 दुकानें मिली, चॉइस साहब ने सारी दुकानें अपने पास तो रख ली। What he did, he sold 5 shops and he took money, advance money for 5 shops. Now, whatever money he has collected, and on those 5 shops, on totality, he has to pay tax on this. He has to pay tax on this or not? What about ITC? What about ITC? ITC तो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि ITC कब आएगा? When he issues invoice on the last day. And what is happening? The payment on these is made through RCM. And when the payment is made through RCM, does he have ITC? So now the matter is pending before GST Council, and GST Council is thinking on adjusting this. So Vijay Kumar ji, whatever your question is, I am discussing that point only. Now we were discussing ITC issue on this. Now understand some more complexities on this. अब जो बिल्डर ने 80 शॉप्स थी, जो 80 शॉप्स थी उसमें जो 10 शॉप्स है उनके लिए एडवांस लिया था, सिर्फ उनके लिए एडवांस लिया था। 9 completely sold when completion certificate happened. बाकी उन्होंने 70 completion के बाद बेची, they are out of GST. One single person, 10 में से 9 की सेल हो गई जिसका एडवांस लिया था। एक आदमी बोला भैया मुझे ये बिल्डिंग पसंद नहीं, मुझे ये शॉप नहीं चाहिए। He said okay, आपने मुझे 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे, मैं अपने चार्जेस काटकर 4 लाख रुपए आपको वापस कर दूंगा। And he gave him 4 lakh rupees in return. Okay. उसने कहा जी इसका जीएसटी भी दे दो। तो जब मैंने दिया था तो 5 लाख का जीएसटी दिया था, अब आप मुझे 4 लाख रुपए वापस कर रहे हो, उसका जीएसटी कहाँ है? 1 लाख का तो चलो मैं नहीं मांग रहा, 4 लाख का जीएसटी दे दो। बराबर बात है।
उसने कहा जी जीएसटी तो मैंने सरकार को दे दिया, आपने मुझे 2 साल पहले पैसे दिए थे, सबसे पहले बाहर आप ही थे, आज 2 साल बाद आप आए हो, आज मैं क्रेडिट नोट आपको इशू नहीं कर सकता। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इस केस में क्या 2 साल बाद क्रेडिट नोट इशू हो सकता है? अब समस्या दूसरी आ गई। अब वो आदमी पढ़ा लिखा, उसने कहा जी मैंने आपको पैसा दिया कब, आपने मुझे सेल कब करी, जो आप मुझे, कहाँ है सेल इनवॉइस? सेल इनवॉइस तो है ही नहीं। What I paid you was an advance. An advance can be adjusted. Advance can be refunded. Against advance, you don't issue an invoice. What you do? You issue me a receipt voucher for advance. और जो क्रेडिट नोट की लिमिट है वो किसकी है? On your invoices. But for advance, there is no credit limit, no time limit. और एडवांस तो पूरा वापस हो सकता है, and there is no issues with GST. इससे कहा चलो मैं क्रेडिट नोट दे देता हूँ, और क्रेडिट नोट दे देता हूँ मैं आपको पूरे 4 लाख का, मैं आपको जीएसटी भी दे दूँ। Now we have a peculiar problem in drafting of GST laws. There are some issues, problems in GST laws drafting also. When you read, say, credit note, I think it is section 34 or 37. The reading is as such that you can issue credit note and you would be allowed to reduce your tax liability, subject to the recipient of the credit note reduces his tax liability. Subject to the recipient of credit note reduces his tax liability. Now the problem is my recipient is B2C. Recipient is B2C. और B2C तो अपनी tax liability reduce नहीं कर रहा. Now can the law stops me from issuing credit note where it is B2C liability, where all the taxes have been passed on to the government? Now this would be tested. क्योंकि कई ऑफिसर B2C के क्रेडिट नोट के अगेंस्ट नोटिसेस देने लगे. Now this is a different thing, but GST Council has again accepted this matter and said, okay, we agree to this and ITC should be available. Also, this should be allowed to refund it. और इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है? To keep all these things separate, what builders usually do, they get multiple registration of their projects. So for example, there is a big project, say उसको 5 टावर बनानी है, these all are high rise, say 30 story building है, तो वो क्या करेंगे, 5 नहीं करके उसको 50 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देंगे. So project A, B, C, D, E, and 1 to 10, one project. So for A, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. So project A1, A2, A3, then again B1, B2, B3. So they will go like this. इसीलिए वो A का पैसा B में मूव नहीं करते. तो A से अगर वापस आ रहा है पैसा तो वो A की ही GST रिटर्न में एडजस्ट करते हैं. So this is the way how they keep project wise statements. So whenever he makes payment, so फिर समझ लीजिए, whenever someone builder will make payment in cash in bank, or whenever he registered units to the landowner, on both of these cases on the same day tax payment liability arises. Now what does RCM is? So RCM is borrowed from this, and there are certain things on which RCM has to be paid, like legal services, like transporter services, and these all kind of services. And whenever
you are dealing with license or something from the department side. From the department side. So then these are restriction on ITC. These are restriction on ITC in these all cases. So, and ITC हम जो work contract वाला है वो छोड़ देते हैं. We will talk about ITC on this. इन सब में ITC अवेलेबल नहीं है. ITC केवल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल है, अदरवाइज ITC अवेलेबल नहीं है. नाउ वी डू हैव इश्यूज विद, ये सब आप पढ़ लेना, आई विल शेयर पीपीटी. नाउ ITC का एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, दैट you are allowed or you are forced to take 80% of the supplies from registered dealer and 100% of the cement from registered dealer. If you don't do these things, then you would be paying GST on RCM. If you remember, in initial days of GST, we have section 9.3 and 9.4, and 9.4 on all kind of receipts except वहाँ पर जो शुरू में थी, that was 5,000 rupees per day allowed था. उसके अलावा हर चीज पर आपको पर डे अगर आप पैसा खर्च कर रहे थे फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, आपको GST देना था. And because that limit was that limit was not good, so they stopped it probably from 13th of October 2017. But they changed it to, now this has been changed to sector specific, and in sector specific, real estate projects are allowed to take, so they are mandatory provisions that they have to take 80% of the supplies from registered dealers, and if they take below than that, then they have to pay RCM, and they are not allowed to buy cements from unregistered dealer or say supplier from unregistered dealer, or unregistered dealer से जो भी सीमेंट खरीदेंगे, they will have to pay on whatever 100%. इसका हम practical भी समझेंगे, but let's understand some more things, and we would understand one or two cases. This is very important judgment on Safari Retreat, and this matter is pending before Honorable Supreme Court. And trust me, guys, there are few judgments in GST जिनको आपको समय निकाल कर पढ़ना चाहिए. Take print out of those and read all those cases, because their arguments and their drafting is very good, कि आपको आगे चल के आपकी अपनी ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाएगी. It could be possible कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में ओवररिड हो जाए, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 142 समझाया है. आई एम नॉट वेरी होपफुल कि ये सस्टेन करेगा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट, और अगर सस्टेन कर भी गया then I have 100% ट्रस्ट की गवर्नमेंट इसको रिवर्स कर देगी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से. बट अगेन दिस जजमेंट हैज सम प्रिंसिपल्स, प्लीज डू अंडरस्टैंड. और इसके बाद हम लैंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो भी थोड़ा समझिए आप. सो सफारी रिट्रीट वाज अ डेवलपर, और इन्होंने एक ओपोलेंट मॉल बनाया इन उड़ीसा, और उड़ीसा का था. तो इसमें जब भी आप जजमेंट इसको पढ़ेंगे तो यू विल सी, जब हम स्टेट GST बोलते हैं तो OGST लिखा हुआ है, तो OGST तो उड़ीसा GST. So they were into construction of the mall, and they didn't sold all the shops or offices, whatever they created. What they did was they provided them on lease or rental, and as this was a commercial renting, commercial leasing, it was subject to GST. Now what happened, while construction of this mall, they had procured cement, sand, and other so many things, and they have got various services also, consultancy, architecture, legal, professional, chartered accountant, all sorts of services, company secretary, and all these they paid SGST. Now they said, and they questioned that we should be allowed IGS, we should be allowed ITC on these
services or supplies which we have received while construction of this mall. And department said, boss, आपने जो कहा वो ठीक है, but what we are seeing that section 17 subsection 5 साफ साफ बोलता है when construction is by own, कि भैया जब मैंने कंस्ट्रक्शन करी अपने लिए तो आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि सर जो आप रीडिंग कर रहे हैं, मैंने अपने बेनिफिट के लिए तो ये मॉल बनाया ही नहीं। इट इज अ चेन ऑफ इवेंट, it is a chain of event, and I am supplying supplies which are subject to GST only because I have procured something on which GST has been charged. अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो कह रहा है भैया जब मुझसे आउटपुट पर टैक्स ले रहे हो, बिकॉज यू आर टेकिंग टैक्स ऑन माय आउटपुट सप्लाईज, मैंने कॉमर्शियल रेंटिंग करी है, उस पर आप मुझसे जीएसटी चार्ज कर रहे हो, तो जो मैंने सप्लाईज रिसीव करी है इस मॉल को बनाने में, उस पर आप मुझे जीएसटी का क्रेडिट दे दीजिए जो मैंने पे करा है। डिपार्टमेंट ने कहा नो, बिकॉज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सेज ऑन हिज ओन, आपने अपने लिए बनाया, एंड बिकॉज इट इज लाइक दिस, आपने अपने लिए बनाया, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू आईटीसी बेनिफिट ऑफ दिस। एंड द असेसी आर्ग्यूड कि भैया मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये मैंने रेंटल के लिए बनाया। एंड सफारी रिट्रीट, हाई कोर्ट अगेन read down the provisions and said, and in certain cases high courts are not happy with the way GST department is functioning, and they said that the view of the construction of interpretation of this case definition of 17.5 is a very narrow interpretation done by the department, and this is chain of event, and department should not read like this, and therefore ITC is allowed. Now, because see, someone might feel कि भैया ये decision बहुत अच्छा है, and it has a good meaning also कि भैया आपको credit मिलना चाहिए, because if we import principles from this chain of events की, तो फिर तो सबको ही ITC दे देना चाहिए। So if someone has created a hotel, वो भी तो होटल की इनकम पर भी तो जीएसटी लग रहा है, तो वो भी क्रेडिट ले लेगा। किसी ने कार खरीदी, और मान लीजिए मैंने कार खरीदी और मैं मिलने जाता हूँ अपने क्लाइंट से, तो मैंने कार में पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करा क्योंकि मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, then it is chain of event. The principles of this decision is very good. Principles of this decision is very good, but again, whether this will sustain in Supreme Court, time will tell, because इस पर stay नहीं दिया Supreme Court ने, the matters before Supreme Court, और Supreme Court ने notice issue करे to the department, whatever they will reply. It's not going to be easy for this decision to sustain Supreme Court. But if it sustains, then all over India, many, say millions of people might get GST credit. Millions of people. और सिर्फ एक डिसीजन से, इस केस के डिसीजन से thousands of करोड़ रुपीस का आईटीसी मिल जाएगा। Now आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि thousands of करोड़ का अगर आईटीसी है तो डिसीजन आपके फेवर में आने के चांस बहुत कम है, because in this case Supreme Court has to read the law and they might struck down the narrow interpretation, and this is a case where
substantial law position is in there. Law. Now, developed plots. तो इसमें काफी सारी डिस्कशन है. मैं आपसे अगले 3-4 मिनट में बहुत सारे केस लॉ डिस्कस करूंगा. थोड़ा सा याद रखना कि कौन से केस लॉ में क्या हुआ. मैं भी भूल जाऊंगा, आप याद रखना. So there was a person, Dipesh Anil Kumar Nayak, and he got सिर्फ ये केस समझाऊंगा, बाकी केसेस को इससे डिफरेंशिएट कैसे करना है वो अलग से बताऊंगा. And in this case, he has got a contract for land leveling. Land leveling का काम मिला, and which was outside municipal area of this town. जिला पंचायत was the plan passing authority, और जिसमें उन्होंने कहा कि आप एमिनिटीज डेवलप कर दीजिए. जो उबड़ खाबड़ लैंड है उसको, जिसको बोलते हैं ना अपनी साइड तो इसको प्लॉटिंग ऑफ द लैंड बोलते हैं, कि भैया बड़ा प्लॉट खरीद लिया, उसको छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड करके बेच दिया. व्हाटएवर इक्विवेलेंट नेम यू वुड बी हैविंग इन योर एरिया. तो एक बड़ा प्लॉट लेकर उसको जमीन को, ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दिया. लैंड लेवलिंग का काम करा. They drew a sewerage and drainage pipes, water line, electricity line, ये सब उन्होंने करा, and street light के provision, telephone lines fit करवा दी, and they sold those lights. And this was passed by the Jila Panchayat authority, and who visited and gave a certificate कि इन्होंने ये काम कर दिया. Then only they were allowed to sell these plots, and it was a providing some sort of basic amenities, nothing like that. And then the question was whether this plotting of the land would be subject to GST or not. Where this was the, so we have understood that clause 3 says, schedule 3 says out of GST, where land is outside GST. But schedule 2 says that construction, if there is a construction activity, wholly or partly, after issuing, before issuance of certificate or occupancy, we would be charging it to GST. And the construction would be construction of a building, civil structure, or part thereof, or a building intended to sell to a buyer. Now the ruling said that the ruling came against this person. The ruling came against this person. I said that जो आपने plotted development करा है, where you done a land leveling and you did a construction of a boundary wall, you lay down some underground cables, pipelines, sewerage system. So these all are taxable activity. And the ruling went further. रूलिंग ने कहा कि भैया जो आपने कॉमन एरिया छोड़ा है, यू आर सेइंग दैट में गार्डन होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, यू हैव मार्क्ड दिस, सो वी विल कंसीडर दिस एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स. और उन्होंने कहा कि भैया जो इसको एंड कस्टमर खरीदेगा वो यहाँ पर हाउस और विलेज तो बनाएगा. लैंड पर विला बनेगा मतलब इसलिए आप उस पर जीएसटी लगाना चाहते. और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये थी इस डिसीजन में दैट Dipesh Anil Kumar Nayak charged the money on super build-up area. Charge the money on super build-up area. And they said that because it is intended for sale to a buyer for a construction complex, therefore we will charge GST. And why this decision was not good? This decision was not good because the ruling goes against the basic framework of GST. Basic framework क्या है? When you provide a construction services, you would be paying GST on such services as per schedule 2. Wherever you are selling land, there's a pure land, then it comes in schedule 3 and it is outside GST. And in this case, they tried to cover land into schedule 2, construction of a complex. And see, if the department has an intention to charge GST on such kind of things,
such kind of activity, then they should come clear with it. Plotted, आप अलग से कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन में डाल दीजिए, शेड्यूल 2 में चेंज कर दीजिए. You put an entry whenever there is a construction of land leveling work on complex land, and wherever there is sold of a plotted land, we will cover under GST. कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोकता. But this is not a very good judgment, and the taxation laws should not create chaos, especially the AAR. This matter went to Gujarat AAR. थोड़ा यहाँ से मैं अब explain नहीं करूँगा चीजें. I would be very brief in explaining all other judgments or orders. So Gujarat AAR, Shri Dipesh Anit Kumar Nag, and they said that the matter went and they said that because you are charging amount on super build-up area, you are charging amount on super build-up area, including you are charging amount on common amenities, road, water tank. That's why we will say GST is applicable. And that's what RERA means. RERA तो हमेशा यही बोलता है ना, that you don't charge money on the super build-up area, you charge money on the basic area. And the Gujarat AAR ruled against Dipesh Anil Kumar Nag. Then we have a Karnataka AAR and AAR decision in market space, which said that wherever there is JDA with the landowners for residential dwelling, it would be liable for GST. Then we have Haryana AAR in Informage Reality. And in this case, there were 20% of the plots were supplied to the landowners. जैसे मैंने आपकी example में भी 20% दे रहा था उनको, ऐसे ही उन्होंने दिया और उन्होंने कहा no, this will attract a work of tax service and at 18%. Now we have a good decision of Madhya Pradesh AAR in Bhopal Smart City Development. The best decision in these cases is of Goa AAR with Shanti Real Estate, but उस पे भी आएंगे. पहले जरा भोपाल का सुन लीजिए. And this is the case of Bhopal Smart City Development Corporation. We said that the completion projects, no completion certificate is required because sale is of the land. Sale is of the land, and whatever amount he is getting, it is post completion certificate. Post completion certificate. क्योंकि जब आप प्लॉटेड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लैंड्स में प्लॉटिंग कर रहे हैं, बड़े प्लॉट को छोटे में डिवाइड कर रहे हैं विद ऑल दोस एमिनिटीज, यू डोंट रिसीव मनी फ्रॉम एडवांस मनी फ्रॉम समवन. यू रिसीव मनी ओनली वंस यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो ये जो कॉमन एमिनिटीज प्रोवाइड करी जा रही हैं, दिस इज बाय हिज ओन. ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी मनी फ्रॉम कस्टमर, एंड दैट इज द वे this is out of GST. Now, this is a very important judgment. I would request you to please take a printout of this judgment and read it at least 2 to 3 times. जो इसमें argument दिए गए हैं, these are the best arguments one could give once you are dealing in real estate. Best argument. उन्होंने, अगर आप इसकी ड्राफ्टिंग पढ़े इस पूरी AAR की एप्लीकेशन की, तो वो कहता है सर, point number 1, my argument is this, and then he said, okay, मेरा पहला argument fail होता है, then leave alone first argument, then my argument is this, second, third, okay, this is my third argument, leave alone की दोनों में मैं हार जाता हूँ, third argument is this, then fourth argument. It has a series of drafting, and the way it has been presented, the way it has been argued, this case has been argued, Shantilal Real Estate, ये डिसीजन उन्होंने फोर्स किया कि आप हमें डिसीजन हमारे फेवर का दीजिए. दिस इज वेरी गुड ड्राफ्टिंग. AAR की इतने ब्यूटीफुल ड्राफ्टिंग मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी. द बेस्ट ड्राफ्टिंग एवर ऑन AAR मैटर्स. बेस्ट. आप इस केस को कभी पढ़ना बहुत जरूर है, बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छा डिसीजन है. You read this, you will learn many things from this.
They said that sale of developed plot is not safe. They said, okay, we have got permission from authorities. We have open space. But we are not selling on a super build-up area. What we are selling only the plotted land. We are charging on the actual basis. No build-up, no super build-up area. And whatever we are doing on the roads, open space, जो भी हम वो चीजें बना रहे हैं, we are transferring all those to the authorities. We are transferring all those to the authorities. What we are selling only actual land. So when we keep both decisions in parallel, दीपेश अनिल कुमार नायक क्या कर रहे थे? वो भी सेम काम कर रहे थे. He was doing same plotting, same land leveling, सब कुछ सेम था. But he was charging on super build-up area. Shanti Lal, real estate is charging only on the land portion. वो कह रहा था कि मैंने वो जो काम करा है, जो मैंने सीवरेज का काम करा, रोड्स डेवलप करे, उस पर वो चुप थे. हालांकि वो जाने तो गवर्नमेंट के पास ही, वो किसी इंडिविजुअल को तो मिलेगा नहीं. इस केस में वो साफ साफ कह रहा है कि जो मैंने इस तरह की चीजें डेवलप करी, दे आर ट्रांसफर टू द जिला पंचायत अथॉरिटी. What I am selling is I am getting money for supplies of only land portion. अब दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, दोनों डिसीजन में, दोनों के एग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग में. So now we move forward how you should draft your agreement. So what I am sharing is, so please, I might be wrong. जो मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा, this is my own experience in which that I advise to my own clients. तो मैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में जो रिकमेंडेशन देता हूँ वो इस तरह की देता हूँ. आप अपने क्लाइंट्स को जब इस तरह की रिकमेंडेशन दें, प्लीज टेक इट ऑन योर ओन बेनिफिट. मतलब अपने हिसाब से समझ कर देना. मैं सिर्फ एक आइडिया देने के लिए. सो फर्स्ट थिंग दैट व्हेनेवर you have to sell these plots plotted, तो आप हमेशा एक्चुअल एरिया प्लॉट पर चार्ज कीजिए. नेवर चार्ज ऑन सुपर बिल्डअप एरिया. So you can have a higher rate for actual plot land. कोई रोक थोड़ी रहा है आपको. You have to charge only on land amount, the actual area of the plot. आप कभी भी super build-up area पर मत जाइए. This is the one way to carve your sale or supplies out of GST. You will always say, sir, I am selling my land. Second, once you say that you have sold a land and there is no construction done on those land when you are selling, then you are out of GST. Once you say that I have not done any construction of the land other than marking it, dividing it, then you are out of GST. Third, always mention in your agreements that all those open areas are not for sale, they would be transferred to authorities. Otherwise also, if you don't write it also, then also you can't sell roads, you can't sell drainage system to the buyer. आप वो वैसे भी नहीं बेच सकते. Adding this line will help you if GST department sends you a notice. देखिए, law is very clear. It doesn't distinguish between developed plot and underdeveloped plot. So never use the word it is a developed plot or it is an underdeveloped plot. You have to always use what I am selling is I am selling plot. आपको क्या बोलना है? I am selling plot. Never use developed plot in your agreements. And sale of plot is outside RERA, subject to you don't have any construction. आप मेरी बात समझ गए? इस पर अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए. I would be happy to answer any query on this matter. आप अपने क्लाइंट्स के एग्रीमेंट ध्यान से पढ़िए. क्लाइंट्स ने जो एग्रीमेंट में गलती कर रखी हो, आप उन एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, एंड देन गो अहेड.
Sir, we are having 186, 187 participants. No one has any doubt. No one has anything to say. Yes, no, repeat any provisions, any confusion, anything. सर आई थिंक वो आप इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं ना, तो वो डाउट हो ही नहीं पा रहे हैं, डाउट क्लियर होते जा रहे हैं. मतलब मुझे आई एम थैंकफुल फॉर दीज वर्ड्स, लेकिन मतलब डर लगता है सर, ऑनलाइन में ना पता नहीं चलता ना, सामने तो शक्लें दिख जाती है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा. ना सर, सब सुन रहे हैं सर, सब. Someone is saying फिर बैंक approvals. I don't understand the query. Please बता दीजिए कि बैंक approval का मतलब क्या है. What you want to say as here? So it could be that someone want to buy this land पर तो मिलेगा नहीं. The second part, we will understand what RERA has to do. What are the functions of RERA? Thank you, Vijay Kumar. So as we said that RERAs are state specific. So RERA rules for Haryana are different from RERA of Gujarat, RERA of Uttar Pradesh. So RERA is state specific practice, and we have to go. But again, what we need as a chartered accountant, we need to understand RERA also, क्योंकि हम लोग RERA में सर्टिफिकेशन देते हैं, एंड यूज देते हैं, और रेरा में बैंक अकाउंट से जो विड्रॉल है, बैंक से जो विड्रॉल होता है, बिल्डर जो पैसा विड्रॉ करते हैं, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सर्टिफाई करते हैं. तो हमें रेरा में क्या चीज क्या मतलब बनती है, हमें समझना पड़ेगा. So let's understand what the RERA means. So this applies for both commercial and residential projects, and 70% of the amount should be kept in designated bank during the project. तो जब भी आप रेरा में काम करेंगे, देखेंगे, तो जब रेरा की बात आएगी तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें स्पेसिफाई करना होता है that this is my bank account, I will get money. और वो डिपार्टमेंट को भी पता होता है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी होस्टेड होता है, और जो आपका कम्युनिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट और उस पर आप किसी प्रोजेक्ट की डिटेल डालते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है, and you will receive money in that bank account only. You don't receive money in other bank account. और जब उस अकाउंट से विड्रॉल की बात आती है, then you need to submit a CA certificate certifying that this is the withdrawal amount. इतने % काम complete हो गया, and this was my project cost, and this much has been made, expenditure has been made, and then come out. And this means that one thing, that booking fees or the application money could not be more than 10% of the project. And project means whatever the apartment, plot, or building, as the case may be, whatever you are selling, you are making supplies. So these are out of RERA. 500 square meter से कम development हो रहा है, and unit does not exceed 8 units, and renovation on repair which doesn't involve any marketing, and you have obtained completion certificate before this act came in your state. And it has an inclusive definition. What does apartment mean? And office is specified. When you go with the definition of RERA, even your office is technically called apartment. So what does apartment means? A showroom, shop, godown, premises, flat, whatever name it may be called, including one or more floor, may be intended to use for residential or complex, or used for showroom, shops, and offices. So the problem why RERA came, that builders randomly used to add 25 to 40% usable area, common areas, passage, staircase, lift, इन सबको ऐड कर देते थे, and they used to say कि बस आपका सुपर बिल्डअप एरिया तो इतने अमाउंट का है और आप इसमें पैसे देते हैं. Vis-a-vis, then authority said that RERA, जो RERA में प्रोजेक्ट्स रजिस्टर होते हैं, आप लोग जिनसे डील करते हैं सारे RERA में ही आते होंगे, and this should be as per the carpet area. Now the problem was that कि
रजिस्ट्री तो हो रही थी सुपर बिल्डअप एरिया पे, और आज भी मना नहीं। अगर आप सुपर बिल्डअप एरिया पे आप और आपका बिल्डर एग्री हैं, आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम। व्हाई? दे गेट हायर रेवेन्यू। आती हुई लक्ष्मी को मना कोई नहीं करता, ये दुनिया का नियम है। आती हुई लक्ष्मी को कोई मना कर, डिपार्टमेंट वाले उस दिन बोलेंगे जिस दिन उन्हें सुपर बिल्डअप एरिया पे कम मिले, बिकॉज दे गेट हायर अमाउंट, दे विल नेवर से। Now, what does a carpet area means? Carpet area का मतलब है 4 दीवारों के अंदर जिस पर आप कारपेट बिछा सकते हैं। 4 दीवार। The area covered by external walls. This doesn't includes balcony. Balcony नहीं आती, लेकिन एक्सक्लूसिव बालकनी अगर आपको दी, वेरेंडा दिया हुआ है, देन इट कुड बी। और यहां पर इश्यूज बनते हैं। नाउ द बिल्डर विल ऑलवेज से कि भैया ये तो रेरा में आता है, दिस इज आवर एरिया। द एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल्स, जो भी आपके फ्लैट के एरिया है, वेरेंडा एरिया है, एक्सक्लूसिव टेरेस ओपन एरिया है, दिस ऑल इज इन द पार्ट ऑफ द एरिया। नॉर्मली अ कारपेट एरिया इज यूजुअली 70%। जो आप इंटरनल पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द अपार्टमेंट है, आप उसके अंदर का सारा एरिया इज, मैंने आपसे कहा जहां पर भी आप कारपेट बिछा सकते हैं, दैट इज योर कारपेट एरिया। नाउ नेट यूजेबल, and there is a build-up area, extra area, and then there is a super build-up area, जिस पर नॉर्मली वो सब चीजों के पैसे लगाकर बिल्डर आपसे पैसा चार्ज करना चाहता है। Now, unless someone goes for a problem before era authorities कि जी मैंने इनसे बिल्डअप एरिया के पैसे देने चाहे, इन्होंने मुझे मना कर दिया, they didn't told me what is a build-up area, तब तक रेरा अथॉरिटीज आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एंड दिस वाज अ स्टेटमेंट ऑफ chairman of this RERA authority present, and he said that builders are taking advantage because people don't know what is. Now, this act is very brief. Regulatory body hai, that is statewide regulatory body. They have a tribunals. Registration is mandatory of more than 500, and 70% has to be kept in this main account. Now we come to renting of immovable property by a builder. Now in in service tax laws, renting को struck down करा Home Solution Retail के केस में Delhi High Court, and they said that there is no service element of renting of a immovable property. And then with after this decision, Finance Act 2010 जब आया, then they did a retrospective amendment from 2007 and they issued a detail. तो यहाँ पर अब बात समझिए, how GST law is different from other laws. IDT laws, तो IDT laws में क्या होता था, चेंज जो आता था वो साल में एक बार आता था, जब फाइनेंस एक्ट आएगा तब आएगा। अभी हाल ये है कि अगर महीने में 2 बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग आ गई तो 2 बार लॉ बदल जाएगा। एंड एवरीवन इज वरीड 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या होगा। दोनों मीडिया आल्सो स्टार्ट सेइंग समथिंग, अनब्रांडेड आइटम पे जीएसटी लग जाएगा। आज ही मेरी वर्डिंग्स हिंदी के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी आई है, which I gave my views on unbranded items. And then what about ई-कॉमर्स को बेनिफिट दे देंगे, 3B रिवाइज कर देंगे, दोनों को पावर दे देंगे, CGST और GST ऑफिसर को नोटिस भेज देंगे। So these kind of things they started coming out. और जबकि 47 GST काउंसिल मीटिंग का बेसिक पर्पस है ये डिसाइड करना कंपनसेशन टू स्टेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना।
तो कंपनसेशन टू स्टेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना वो सब छोड़कर मीडिया इज डिस्कसिंग दीज ऑल थिंग्स, और हम भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं. वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग. बट पहले क्या होता था, साल में एक बार लॉ चेंज होता था. देन देयर वाज अ इशू कि भैया इस पर क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा. एंड देन दे सेड द नेम whether you can take credit on it. उन्होंने कहा no, it is neither supplies not this, you can't take credit, and this was a issue. And then Nirlon Limited sister at Mumbai, we said that okay, you can take credit of such kind of ITC, but Safari Retreat we have done. We've done this also. Now there is an issue. हम TDR बोलते हैं एक normal common parlance में. We keep on talking TDR. We have two words: transfer of development right and transferable development right. क्या दोनों same है? So because there are two words, whenever there are two words in a technical terms, तो दोनों के मतलब अलग होते हैं. But transfer of development right is usually with the local authorities. जैसे for and transferable development है जब third person consideration. Normally for say एक झुकी झोपड़ी है कहीं पर and JJ कॉलोनी है और JJ कॉलोनी को गवर्नमेंट प्रॉमिस कर देती है कि साहब यहाँ पर एक होटल बनेगा और साथ में एक बिल्डिंग बना देंगे. जो भी आप लोग हैं, आप जो JJ कॉलोनी में रह रहे हैं, आपको एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी और उसमें सबको आपको घर दे दीजिए. Now that plot of land technically it belongs to all those who were living in that JJ colony, and they have the rights. But their right is exercised by the local authority. Say DDA ने या for example Jaipur Development Authority होगी या मुरादाबाद Development Authority होगी, उन्होंने वो right exercise करके एक builder को दे दी. तो यहाँ पर फिर से वही बात आई, बिकॉज यू हैव गॉट द राइट, आपको उसका GST पे करना है. अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि बिकॉज दैट लोकल अथॉरिटी हैज प्रोवाइडेड मी दैट, बिकॉज सच विल नॉट कम अंडर RCM एंड आई विल गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 245W कि भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस दे रही. नो, सच काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस. ठीक है, एक चीज तो ये समझिए आप. बिकॉज इन दिस समवन इज प्रॉमिसिंग यू टू डेवलप विदाउट हैविंग परमिशन, थर्ड पर्सन आपको दे रहा है. देन वी हैव फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शंस की बात होगी कितनी उस पर आपने कौन सा राइट किया. दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू GST. तो इसमें एक चीज समझ लीजिए. अब आप फिर समझिए, जब उसने वो कंस्ट्रक्शन करी, बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन करके उसने वो जो फ्लैट्स उन JJ कॉलोनी में रहने वालों को दी, क्या उस पर GST लगेगा नहीं लगेगा? और उस पर लगेगा. एंड आइडियली दोज वुड बी अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग. तो 1.5% माइनस 1/3 लैंड, तो यानी 1% पर GST लगेगा. तो फिर समझ लीजिए रेट्स क्या क्या पड़ेंगे. अगर ये तो पुराने 1 अप्रैल से पुराने रेट है, बाद के रेट्स की बात कर लेते हैं. 1.5% माइनस 1/3 1%. और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो 1/3 लैंड की डिडक्शन है, गुजरात हाई कोर्ट हैज अलाउड that you can challenge this and you can do it actually. But again, if you are dealing in a high-rise building, then it is not beneficial to you. If you are developing a bungalow or a villa, then it is beneficial to you. For commercial only, you will get ITC. Otherwise, you will not get ITC. और REP projects में commercial 5% होता है with ITC. Otherwise, it is वहाँ पर तो नो, अफोर्डेबल में तो नो ITC एंड दिस ऑल टाइम. अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा इसका समझाइए.
रजिस्टर्ड डीलर हैज रिसीव्ड, अब मैं बता रहा हूँ आपको 80% आपको रिसीव करना है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलर है रिसीव 85% फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लाई, अनरजिस्टर्ड से 10%, और जो 15% अनरजिस्टर्ड से लिया उसमें 5% सीमेंट है. तो इस पर कितने पर उसे आरसीएम में पे करना है? आरसीएम कितने पर पे करना है? आरसीएम पे करना है 5% ओनली ऑन द सीमेंट, ओनली ऑन द सीमेंट पार्ट, क्योंकि 80% की डेफिनेशन फ्रॉम परचेसिंग डीलर्स ने रजिस्टर्ड डीलर्स ने कर रखा है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, he has received 70% from registered supply, unregistered 30%, cement from unregistered 0%. अब कितने पर उसे पेमेंट करना है? 10%. Very simple, very simple. Third question, now tell me, रजिस्टर्ड से 50% लिया, अनरजिस्टर्ड से 35%, सीमेंट 15%, अनरजिस्टर्ड. अब बताइए कितने पर पे करना है? फिर सोचिए, आपको टैक्स कम पे कराना है. 5% तो पूरे गलत है सर. सार्थक जी 5% तो. मनीष जी यू आर ऑन द राइट पाथ. दिनेश जी इज करेक्ट. 15 + 15, द आंसर इज 15 + 15. देखिए सीमेंट पर तो एक भी लेंगे तो देना ही देना है, तो सीमेंट पर तो 15% देना है. 50 + 15 पे हो गया, कितना हो गया? 65. 80 - 65, 15 बचा, और वो 15 में अनरजिस्टर्ड से पे करूंगा. अगर मैं पहले 30 का 30 अनरजिस्टर्ड से पे कर देता हूं, then also my liability to pay 15% from unregistered for cement would be there, and then I would end up paying 45%. So what I have to do? First I have to pay 15% for cement, and then I will say 50 + 15, 65, 80 - 65, 15%, and I will pay for unregistered. The reason behind this, आप हमेशा याद रखिए, सीमेंट पर रेट ज्यादा है, बाकी चीजों पर कम होगा. अब ब्रिक्स पर कितना रेट है? हाउ मच इज द रेट ऑन ब्रिक्स? देखो अभी अमेंडमेंट आई है, अभी आई है सर. नाउ यू नो 6%, 6%. तभी तो वो कह रहे थे ना 5% +1 डाल दो, देन इसीलिए. ठीक है. सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. मेट्रोपॉलिटन सिटीज की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, अब एक लास्ट चीज कर लेते हैं आज के लिए, फॉर वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन कहाँ, कौन से सेक्शन में होती है? तो सेक्शन नंबर बता दो. आज पहले बताया था स्टार्ट. सेक्शन नंबर बताओ वैल्यूएशन का कौन सा? Just a section number without Google. Section 7 is for supplies, 9 is for levy. Yes, correct. So many correct. Section 15 is for valuation. So section 15 valuation में क्या है? When you talk about charges, when you talk about money, and I say you two are not related party. You two are not related party. और अगर बात हो रही है अनरिलेटेड पार्टी, देन कंसिडरेशन इज सोल क्राइटेरिया फॉर वैल्यूएशन. कंसिडरेशन इज, अब समस्या ये आती है किसको कंसिडरेशन माने. जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो, जब आप खरीदते हो, से आप एक बिल्डिंग खरीदते हो, आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो, कमर्शियल हाउस खरीद रहे हो, ऑफिस खरीद रहे हो, तो उसके साथ साथ वो कई सारी चीजें लगा देते हैं. अब इसमें समझना है किस किस एलिमेंट को जीएसटी में लेना है, किसको नहीं लेना. मैंने तो खैर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल बना दिया आपकी ईज के लिए कि आपको याद रहे, गड़बड़ ना हो, लेकिन समझ लेते हैं.
आपने 1 करोड़ की बुकिंग कराई, आपने उससे कहा भाई मेरे को ना सी फेसिंग दे दो, उसने कहा जी सी फेसिंग के 10 लाख रुपए अलग लगेंगे। तो ये क्या है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस ऐड हो जाएंगे। आपने कहा जी आप एक कार तो दे रहे हो लेकिन मेरे पास तो 2 कार है, मैं हस्बैंड और मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग है, तो हमें 2 कार की पार्किंग चाहिए। उसने कहा जी मिल तो जाएगी, उसके 5 लाख रुपए अलग लूंगा। तो आपने उसके 5 लाख रुपए अलग दिए। उसने कहा जी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं आप खरीदोगे, मेरे यहाँ खरीदना है तो मेरे बुकिंग चार्जेस 20,000 रुपए पहले देने हैं अलग से। आपने वो 20,000 दे दिए, तो दिस इज बुकिंग चार्जेस। उसने कहा जी मेरे बिल्डिंग में एक क्लब बना रहा हूं मैं बढ़िया सा, क्लब के बड़े बेनिफिट्स हैं, आप उसमें लोगे क्लब बेनिफिट, क्लब ज्वाइन करोगे, क्लब के अंदर स्विमिंग पूल है, आप उसमें घूम भी सकते हो। बोले इसके जो चार्जेस हैं ये 50,000 रुपए अलग है। ठीक है, तो इसके भी। बोले जी आपसे बात बढ़िया, आप बढ़िया आदमी, लेकिन आपके साथ तो एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराना पड़ेगा, और ये जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा हमारे वकील साहब 5,000 रुपए लेते हैं, वी विल चार्ज यू ड्राफ्ट एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग चार्जेस 5,000 रुपीज। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब एग्रीमेंट तो चाहिए। बोले जी एग्रीमेंट के 5,000 नहीं दोगे तो भैया एडवांस देकर चले जाओ। अब कोई इतने पैसे थोड़ी देता बिना एग्रीमेंट के। तो उन्होंने कहा ये जो एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग चार्जेस है ये आपसे लिए जा रहे हैं, इस पर भी जीएसटी लगेगा। बोले जी पहले उन्होंने कहा जी मेरे नाम पे बुकिंग कर दो, अभिषेक राजा के नाम पे बुकिंग कर दो। फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा करो, अभिषेक राजा में तो पैसा थोड़ा सा कम है, ऐसा करो अभिषेक राजा एचयूएफ में बुकिंग कर दो। अब मैंने ये मॉडिफिकेशन कराया, उन्होंने कहा जी मॉडिफिकेशन तो हम कर देंगे, इसके 5,000 अलग, इसके और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये तो आप सेक्शन से अलग से लिंक कर सकते हो कि डिलेड पेमेंट पर सेम चलता है, और जब एक्चुअली पेमेंट होता है तब इस पर जीएसटी जाता है। लेकिन उन्होंने कहा वन टाइम मेंटेनेंस डिपॉजिट, ये जीएसटी के बाहर हो गया। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दीज आर स्टेट मैटर्स। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सीवरेज, दीज आर रिफंडेबल मेंटेनेंस डिपॉजिट। अब जरा इसको एक दूसरे लेवल पर समझो, इस समस्या, ये एक समस्या है और इसको आप जरा अच्छे से समझो, और इस पर मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा मुझे आंसर भी दें, क्योंकि मैं जरा समझूं, मैं भी थोड़ा समझ लेता हूँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प लेता हूँ, और अब पीपीटी से बाहर बात करते हैं। इनफैक्ट आज अच्छी बात ये हुई है कि मैं जो पॉइंट लेने वाला था वो लेने से पहले ही मैसेज में आ जाता है कि सर ये पॉइंट और डिस्कस कर लें। ये अच्छी बात हुई है, तो यानी ठीक से तैयारी करके आया था। अब बिल्डर ने क्या करा, बिल्डिंग बन रही थी, कुछ लोग आके रहने लगे। 1.5 साल तक बिल्डर ने उस आरडब्ल्यू की तरह चलाया उसको। 1.5 साल बाद उसने, जब सारे लोग आ गए, उन्होंने अपनी आरडब्ल्यू बनाई और उसने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया आरडब्ल्यू को। बात समझ में आ रही? अब पहले ये बताइए, जो पैसा आपने इसको दिया बिल्डर को, जो उसने आरडब्ल्यू को ट्रांसफर करा, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए, यस और नो? जब आपने बिल्डर को दिया, when you paid the amount to the builder, देखिए जो आप लोगों का व्यू आ रहा है, यस आ रहा है, और ज्यादातर लोगों का व्यू उसमें यस है, because the word used for exemption is for RWA, and whenever we understand or do provide any sort of exemption, then it has to be strictly construed word by word, comma, full stop, वो उसी तरह पढ़ा जाता है। Now what about 7,500?
the monthly maintenance, वो किसको अलाउड है? वो किसको अलाउड है? To RWA or to a builder? That 7,500 rupees per month exemption is to RWA. Is the builder RWA? $7,500 monthly exemption is only to the RWA, and builder is not RWA. So there is an opinion कि वो जो 7,500 की एग्जम्पशन है वो भी सिर्फ बिल्डर के लिए नहीं है, सॉरी सिर्फ आरडब्ल्यूए को है, बिल्डर को नहीं मिलेगी. बिल्डर हैज टू पे इवन व्हेन ही इज चार्जिंग लेस देन 7,500 पर मंथ फ्रॉम यू. Now, a third thing which has popped out through a recent AAR ruling, which is not part of this this PPT. Now, recently someone left the building and he was very happy and he paid some sort of amount as a token amount to the RW. Then what they said? AAR said, please pay GST on it. बोले जी ये तो कोई इस पे तो टैक्स की बात ही नहीं हो रही, ये तो इस आदमी ने हमसे खुश होकर देकर गया, हमने कुछ इससे मांगा नहीं था, ये खुद खुश होकर देकर गया. AAR said बॉस तभी तो GST लग रहा है, because you have given him so good supplies कि उसने खुश होकर आपको पैसा दे दिया. This has direct link with your supply of services and this is chargeable to GST, which is recent AAR ruling. Though I am not happy with that ruling, but I am still to figure out what arguments could be against that ruling, because I am not able to figure it out. That's why that ruling is not part of it. So somebody has asked the question कि sir 80% की definition में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा. तो they said this is a valid question and raised by many people, many organizations. So they said कि भैया जिनको आप purchase की definition में समझते हो, expenditure की definition में समझते हो, inputs की definition में समझते हो, that would come in the 80%. For example, you have salaries, so salaries would not be part of that 80%. तो मान लीजिए आपका जो खर्चा है that would be out of that 80%. Interest is finance charges. I would not be able to answer this because this has not been answered in FAQ. इतना ही पढ़ के आया था. Now we have one more question. Builder collected 2,500. So please guide what the tax. So when builder is transferring money to the RWA, builder is transferring, तो then supplies are from RWA, तो उस पर तो GST नहीं. Okay, because that is refundable security. If that is not refundable securities, then it's not. Sushant Agrawal ji, I get my plotted development registered in RERA. Would GST be applicable on such projects? Sir, please check your agreement, drafting of agreement. I have provided you answer for that. If your agreements are like this, then you can continue. ये PPT आपको मिल जाएगी. मैं अभी email कर दूंगा. And rest I leave it to you. And over to Madhurima ji and Lokesh Maheshwari sir and Anil sir and all the dignitaries. Thank you. और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए. सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, सर जो सोसाइटी है उसके अंदर जब सोसाइटी कंप्लीट हो जाती है पूरी, जो मल्टी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस पर फ्लैट 7,500 रुपए तक तो एग्जम्प्ट है. हम मानते हैं कि किसी सोसाइटी के अंदर जो ये मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह सब मिला के ये 20 लाख से क्रॉस हो रहा है और वहां पर उन्होंने एक शॉप भी किराए पर दे रखी है, तो अब उसको उससे वो 4,000 रुपए महीना वो उससे रेंट ले रहे हैं, तो क्या अब उसको जीएसटी नंबर लेना है? Then we go for the basics. What is the definition of aggregate turnover? So this 7,500 rupees, say I'm charging 6,000 per month.
which is so this is exempt supplies, and then 4,000 into 12, 48,000 is my taxable turnover. So then if it crosses 20 lakh, then I have to get myself registered and pay taxes on 48,000. और सोसाइटीज में कई चीजों पर अलग से भी टैक्स लग जाता है, जैसे कि कई बार वो कुछ अपनी स्पेस दे देते, मान लीजिए दे हैव अ प्लेग्राउंड जिसमें शादी के लिए दे दिया, सही है, हॉल दे दिया। शादी के लिए तो खैर मैं नहीं कहूंगा, वो तो फिर रेजिडेंट ही ऑब्जेक्शन कर देते हैं। वो ज्यादातर स्पेस इस तरह देते हैं कि भाई कोई स्टॉल लग गया, कोई फेयर लग गया छोटा सा 2 दिन का 4 दिन का, या इस तरह की कि भाई कोई आकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहा है, कोई कोचिंग सेंटर चला लेते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यूजुअली हैपन इन सोसाइटी। सो दैट दोज आर चार्जेबल टू जीएसटी। एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं, आपकी बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा के चले जाएंगे, यू चार्ज फ्रॉम देम, दिस इज चार्जेबल थिंग। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर जो पहले आया था, for developing a project we want to sell to customer and we have to get the project from bank for customer loan, and without RERA we would not get bank approval. नहीं, मैंने इसका आंसर कर दिया है that you have to draft your agreement. You should not use developed plot, you should use only the plot, और plotted area का पर एक्चुअल पर ही चार्जेस कीजिए। दिनेश जैन जी ने रेज हैंड किया है, टेक्निकल टीम अगर आप उन्हें अलाउ करें बोलना। सर कोई जैसे पूछना चाह रहे हैं उसको अलाउ कर देगा? सर सबको अलाउ कर दो, मेरे को क्या दिक्कत, तो ऑफिस में बैठे हैं आराम से। दिनेश जी आप म्यूट पे है, एक बार सर अनम्यूट करके आप पूछें। कर दिया। Am I audible? हाँ यस Yes sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, इंटरेस्ट के लिए जैसे आपने कहा कि भाई क्लियर नहीं है इसका कि वो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, पर हेलो जी सर हेलो, बोलिए। उसमें सर कुछ ऐसे व्यू आ रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई इंटरेस्ट लेते हैं जैसे एनबीएफसी से या किसी जो रजिस्टर्ड है, तो उसकी सर्विस तो टैक्सेबल मानेंगे, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं उसको नहीं मानेंगे। आपका क्या व्यू है सर इसमें? सर अनरजिस्टर्ड से मैं इंटरेस्ट दे ही नहीं सकता। अनरजिस्टर्ड से मतलब जैसे इंडिविजुअल पर्सन से आप किसी लोन लिया तो अनरजिस्टर्ड हो गया ना सर वो, तो उसकी जो सर्विसेज अपन ले रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड हो गई, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन में आएगा वो। ऐसा आपका क्या व्यू है? मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट इज नॉट अ क्लियर, इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू, and whenever there are controversial issues multiple views are possible. I would feel कि interest जो है that is a finance cost, that is a finance cost, that is Yes, not the real cost of the project. Yes sir. And whenever there are finance costs involved, that should not be part of my 100%, क्योंकि जब आप 100% की बात करते हैं वो आप वहां पर सबमिट करते हैं और उसमें बाइफर्केशन आप देते हैं कि मैं इतने रुपए का प्रोजेक्ट है और इस तरह से इस प्रोजेक्ट को यूज करूंगा। तो इसके सर कोई अपन को कोई फॉर्म तो फाइल होना नहीं, खाली आपको तो शॉर्टफॉल जमा कराना है डीआरसी। नहीं सर 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 आपने रेरा में डिक्लेयर कर रखा है मेरा रेरा को छोड़ दो, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड भी नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं देना, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सर इसका मतलब बाद में वो बड़ी लायबिलिटी निकले तो अपन क्या करें, उसने जी अभी से डिक्लेयर कर दें कि भाई मैंने कोई जो टैक्स का विजन नहीं हुआ हो जीएसटी का, और मतलब कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच जाए कभी कोई लायबिलिटी आए तो फ्यूचर में। But I would not be able to answer this at this moment because whenever there are two views possible, my role is to explain you both views. दोनों के लॉजिक्स एंड आर्गुमेंट्स देना मेरा काम है। तो एक चीज सर, एक चीज ये भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट में आपने लैंड लिया और उसमें ब्याज पे पैसा लिया और आपने कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया, तो उस पर अगर पैसा देना लगे तो बहुत लायबिलिटी हो जाएगी जीएसटी की। 4 साल आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, उसका ब्याज दे रहे हैं, तो उस पर अगर जीएसटी देंगे तो बहुत लायबिलिटी हो जाएगी सर, वो तो आएगा ही नहीं कभी 80% में। Sir, again, what I am saying, these are finance costs. These are not the project cost.
ठीक है सर, थैंक यू सर। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं बचे, कोई क्वेरी? Someone has raised hand. Now I would like to request CIRC Secretary CA Lokesh Maheshwari ji to give vote of thanks. Thank you, Madhurima ji. I would like to thanks to today's speaker, CA Abhishek Rajaram ji, for nice deliberation on real estate and building. Very nice deliberation, sir. एक concept पूरा clear हुआ है पूरे session के अंदर, और members की जितनी query थी वो भी पूरी आपने solve करी है। और फिर भी अगर किसी members को query है तो सर को या CIRC को आप भेज दें तो definitely सर उसका जवाब देंगे। साथ में सर एक चीज और चाहते हैं कि जैसे भी आगे भी जीएसटी के सेशन रहेंगे तो बिल्कुल सर हमें आपकी सेवाएं चाहिए सर उसके अंदर। तो इसी के साथ जितने भी मेंबर्स ने मौका दीजिए अगर सही अच्छा बोला है तो। अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, हम आपकी ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं सर। वो एक दूसरी दुनिया है, वो दूसरी दुनिया है, और प्रोफेशनली डिस्कशन एक अलग दुनिया है। दे आर टू थिंग्स। मैं सभी मेंबर्स का भी शुक्रिया करता हूं जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधुरिमा जी, थैंक यू, sir. थैंक यू।